Welcome. So I hope everybody knows the new timing of our class on YouTube. It is 11 a.m. instead of 11:15 a.m. तो हम हमारा YouTube का जर्नी जो है ना वो 15 मिनट पहले स्टार्ट कर रहे हैं. That is at 11:15 a.m. So let's start our class without wasting any time. Yes, I know there will be like the student will take time to join us because बहुत सारे students 11:15 को ही join करेंगे. सो तब भी हम अपडेट कर देंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. सो हैप्पी दिवाली चंदू भैया. थैंक यू वेरी मच. सो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी. अब आपको अनअकैडमी पे क्या मिलता है? यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, structured courses, live test and quiz and unlimited access because everything that is going live on Unacademy is in recorded format. तो अगर आप लाइव क्लास देख भी नहीं पाए ना तो यू कैन वॉच दैट क्लास इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट, तो आपका कुछ मिस नहीं होगा. मॉर्निंग रुद्रानी, what you need to do, you need to download Unacademy Learning app from Google Play Store or App Store and start enjoying learning, start your journey to crack UPSC CSE examination. Thank you, Ramandeep. Same to you. This is about me, guys. You already know about me. This is my Telegram channel. Just subscribe to this Telegram channel and follow me on Unacademy. This is my Unacademy profile. So follow me on Unacademy. Dedicate your heads to me on Unacademy and don't forget to use ESK code for 10% discount on Unacademy subscription. These are India's top educators who will help you to crack UPSC CSE examination. I am already one of them. Thank you very much to you guys. See guys, when you are going for a plus subscription, this plus subscription will give you live classes, test series, unlimited practice and structured schedule. A plus course for 12 months normally costs you 49,500, but if you use this code SKUS, it will give you 10% discount and it will cost you only 44,550 rupees. And if you are going for iconic subscription of 12 months, instead of paying 69,500, you will pay only 62,550 because this SKUS code will give you 10% discount. अब आपको iconic में extra क्या मिलता है? You will get a personal coach, you will get daily mains question and answer practice, study planner and personalized feedback. Okay, these are the options that are available with Unacademy. Okay, then this is the optional subscription and this is the general studies subscription. Every time you are going for subscription, it is must to use this code SKUS because this will give you 10% discount. Sir, I came across a question, how does vermin differ from game animals? Rudrani, right now game animals, that concept does not exist except in some tribal areas. Okay, and vermin are those animals which are causing us economic or social loss. Game animals, they do not cause any economic or social loss. We kill them just for the sake of fun, and we kill vermin because they are creating economic problems or social problems. This is the main difference between game animal and the vermin. Rudrani, clear? Next. So we discussed about the spinal cord, ANS, ENS, then SNS, enteric nervous system, somatic nervous system, and we already know that mosquitoes can test the blood because of the four chemicals present in our blood, and those chemicals are glucose, sodium chloride, sodium bicarbonate, and adenosine triphosphate (APP). These are the chemicals that are responsible for test, and we already know mainly female mosquito can distinguish between a blood and nectar because nectar is food and blood is required to lay eggs. Then जो blood feeding उसके बाद ग्लूकोज दोनों में मिलता है नेक्टर और ब्लड में, लेकिन सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ATP you can find only in blood. Clear? Then next we discussed about the superconductor. Before we go ahead, please answer some questions of mine. First question is, what is superconductor? You will answer this. Okay, then we will go ahead. What is superconductor? Superconductor की दो qualities बता दीजिए. Then second, when a superconductor shows superconductivity. Anvisha Sharma, hello, how's you Anvisha? When a superconductor shows
सुपर कंडक्टिविटी? चलिए बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस। ओके, जीरो रेजिस्टेंस एंड इनफाइनाइट कंडक्टेंस। दो क्वालिटीज होती है सुपर कंडक्टर की, वन इज जीरो रेजिस्टेंस एंड अनदर इज इनफाइनाइट कंडक्टेंस। वेरी गुड, वेरी गुड। And again, a superconductor shows superconductivity at critical temperatures. At critical temperatures, इसी को हम कहते हैं cryogenic temperatures, इसी को हम कहते हैं very low temperature. Okay, so when we want to use superconductor, what is the main issue? If we want to use superconductor in our daily day-to-day life or in our day-to-day applications, so what is the problem guys? The main problem is superconductor shows superconductivity at very low temperature, at very low temperature, and which is not practical. उसे यूज करना प्रैक्टिकल नहीं है। तो हमने ये प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व किया? हाउ वी रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ this very low temperature? So now we have a superconductor which shows superconductivity at room temperature. That's cool. It shows superconductivity at room temperature. लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम क्या है? It shows superconductivity at room temperature of 15 degrees Celsius only when we apply the pressure that is equivalent to the pressure on at the center of our earth. तो अर्थ के सेंटर में जितना प्रेशर है ना, उतना प्रेशर अप्लाई करने के बाद ही ये सुपर कंडक्टर हमें सुपर कंडक्टिविटी शो करता है। तो ये प्रॉब्लम है। अब हमारे जो रिसर्चर्स है, पहले हमारे रिसर्चर्स ने सुपर कंडक्टिविटी अचीव की रूम टेम्परेचर पे। नाउ दे आर वर्किंग टू अचीव सुपर कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर एज वेल एज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको ये न्यूज अपडेट याद रखने हैं अगर आते हैं करंट अफेयर में तो। क्लियर? Here we are going ahead. Please tell me the name of the material which shows superconductivity at room temperature. What that material is made up of? What that material is made up of which shows superconductivity at room temperature or equal to the pressure that is equal to the pressure or at the center of Earth? Yes, I am betting guys. So it is carbon. It is made up of carbon, sulfur and hydrogen. Correct? It is made up of carbon, sulfur and hydrogen. So this is the superconductor. No, no Ramandeep, it is not niobium tin alloy. It is carbon, hydrogen and sulfur. इनसे बना हुआ है। So that's it. ये हो गई हमारी whole story superconductor की। So a new material shows signs of superconductivity at room temperature. You know this. It conducts electricity without resistance up to 15 degree Celsius. Yes, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है? It shows or the property survives only under pressure such as those found at the center of the earth. Then what is superconductivity? When a charge moves through a material without resistance, that is superconductivity. Cute boy, हमारा क्लास 11 बजे स्टार्ट हो रहा है आज से, ठीक है? Then okay, हाँ, अब मुझे बताइए what is the difference between a conductor and a superconductor? Conductor also allows flow of electricity and superconductor also allows flow of electricity. Then what is the difference between two? The only difference between two is conductor do have resistance and in case of superconductor there is zero resistance. There is zero resistance. Clear? And because a conductor has resistance, so while when electricity flows through a conductor, electricity will be lost in the form of heat. Electricity will be lost in the form of heat. Arey Anvesha, don't worry, it is one of the cool classes that you ever come across. आपको सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ ना, जितना समझ में आ रहा है जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अगर समझ में नहीं आता है तो इमीडिएटली मुझे लाइव चैट में पूछ लो, लेकिन डरो मत। आई एम हियर फॉर द स्टूडेंट ऑफ साइंस, आर्ट एंड कॉमर्स जिन्हें साइंस का डर है। आपने अगर प्रीलिम 2020 का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें क्लोज टू 18 क्वेश्चन साइंस के थे, 36 मार्क, नॉट अ स्मॉल नंबर। आप बस मेरे क्लासेस अटेंड करो जो मैं 2 टाइम कंडक्ट करता हूँ। एक मेरा क्लास होता है 8 AM को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे और दूसरा होता है 11 AM को यूट्यूब पे।
ये 2 क्लास अटेंड करो और आपकी साइंस की जो डर है ना वो इवेपोरेट हो जाएगी। ठीक है अन्वेषा? यस। तो जो प्रॉब्लम है ना कि हीट के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी लूज होती है, दैट डज नॉट हैपन इन केस ऑफ सुपर कंडक्टर। क्लियर? सो सुपर कंडक्टर्स हैव जीरो रेजिस्टेंस एंड इनफाइनाइट कंडक्टेंस। देन ये भी हमने देखा था, नॉर्मली लिक्विड हीलियम सुपर कंडक्टिविटी शो करता है, लेकिन कितने टेम्परेचर पे? -269.15 डिग्री सेल्सियस पे। न्यूबियम टिन का अलॉय भी सुपर कंडक्टिविटी शो करता है, लेकिन कितने टेम्परेचर पे? -196.15 डिग्री सेल्सियस पे। इंस्टेड इंस्टेड आपके कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर से जो सुपर कंडक्टर बना है, वो सुपर कंडक्टर कितने टेम्परेचर पे शो करता है? ओके ग्रेट अन्वेषा, थैंक यू वेरी मच। कितने टेम्परेचर पे क्रिएट जनरेट करता है ये या सुपर कंडक्टिविटी शो करता है? बताइए जल्दी से, क्विकली। इट शोज सुपर कंडक्टिविटी एट 15 डिग्री सेल्सियस। कितने टेम्परेचर पे? 15 डिग्री सेल्सियस पे ये सुपर कंडक्टिविटी शो करता है। देन चलिए आगे। तो ये व्हेन वो मटेरियल इज इन रेस्ट, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है अलग अलग डायरेक्शंस में। क्लियर? नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज द अपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड बिकॉज ऑफ दिस अपोजिशन एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसीलिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या होती है? हीट होती है, हीट इमिट करती है। फॉर एग्जाम्पल योर मोबाइल फोन, ये भी आपको पता है, करंट का पता है। सो दिस इज अबाउट द रेजिस्टेंस, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर, तो मैंने आपको बताया। व्हाट इज द पॉजिटिव यूज ऑफ कंडक्ट रेजिस्टेंस गाइस? वेरी गुड मॉर्निंग मयंक सिंह राजपूत, वेरी गुड मॉर्निंग। यस टेल मी, इज रेजिस्टेंस ऑलवेज अ प्रॉब्लम? रेजिस्टेंस अगर किसी मटेरियल में है तो इट लीड्स टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट लीड्स टू द लॉस ऑफ एनर्जी, इट लीड्स टू द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये प्रॉब्लम है, हीटिंग की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन देर इज वन, there are many positive applications of resistance. One of the positive application of resistance is toaster. Without resistance toaster में bread toast ही नहीं हो पाएगा। So any electric appliance which emits heat and we use this heat for our benefit, तो उसमें क्या है? We are using resistance for beneficial purposes। ये देख लीजिए, resistance may sound negative in electricity, it can be used beneficially to generate heat and brown bread, या फिर ओल्ड इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था। मयंक सिंह राजपूत इज सेइंग वॉइस स्लो है गुरुजी, इज इट टू लो? वॉइस इज टू लो? इज इट टू लो गाइस? नहीं ना, क्योंकि मैंने इंक्रीज किया अभी। आई गेस, हेलो रविजीत, आई गेस मैं क्लास के स्टार्ट में किसी ने नहीं कहा, इट मीन्स कि अभी वॉइस ठीक है। चलिए आगे। नाउ यस यू नो दिस, हाइड्रोजन, कार्बन एंड सल्फर। ठीक है, चलिए आगे। सुपर कंडक्टर के टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस हमने देखे थे। वी कैन, यस टेल मी, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर, वेयर वी कैन यूज सुपर कंडक्टर, वेयर वी कैन यूज सुपर कंडक्टर? मयंक रुद्रानी सिंह का एक सजेशन सुन लो। एक तो आप अपने सिस्टम की साउंड फुल कर दो, या फिर यूज हेडफोन विथ फुल साउंड, आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। दिस इज माय वर्ड, डोंट वरी, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। बस आपको एक तो हेडफोन यूज करने, या फिर क्या यूज करना है, आपकी सिस्टम का साउंड 100% करना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे, चलिए बताइए। अब हम आगे चले, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा है आपको। सो एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर, नंबर 1, वी कैन यूज सुपर कंडक्टर इन एमआरआई, मैग्नेटिक रेजिस्टेंस रेजोनेंस इमेजिंग। वी कैन यूज सुपर कंडक्टर इन टू रिड्यूस trans loss of electricity in transmission, or you can simply say cute boy, we can use superconductor to transmit electricity from point A to point B. Very good Rudrani, we can use superconductor in all gadgets that run by electricity. शर्मा जी हमरे में वॉइस बदतर है, बट वॉइस प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, वॉइस बेटर है आपके इसमें मयंक, लेकिन वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, दैट माइट बी बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, स्लो इंटरनेट नेटवर्क इशू। मयंक सिंह,
ठीक है। यस, विंड टर्बाइन के जनरेटर्स में ये देख लीजिए, वी कैन यूज सुपर कंडक्टर्स इन एमआरआई मशीन्स, वी कैन यूज सुपर कंडक्टर्स इन मोबाइल फोन टावर, वी कैन यूज सुपर कंडक्टर्स इन जनरेटर्स फॉर विंड टर्बाइन। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, बल्कि क्रायोजेनिक। सो डू वी नीड राइट नाउ, अभी जो हमें पता चला है उससे, डू वी नीड टू गो एट क्रायोजेनिक टेम्परेचर टू अचीव सुपर कंडक्टिविटी, इज इट नीडेड? और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, सुपर कंडक्टिविटी हम कहीं पे भी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं करते। वी आर डिस्कसिंग दिस सुपर कंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टिविटी इन लैब्स ओनली, दिस इज ओनली थियोरटिकल। देर इज नो, राइट नाउ वी आर नॉट यूजिंग सुपर कंडक्टर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। yes, we do not use it now. So cryogenic का problem हमने solve किया, yes, now we have a material which can show super conductivity at 15 degree Celsius। लेकिन problem क्या है, common superconductors do not work at atmospheric pressure, और जो सुपरकंडक्टर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करते हैं उनको, उनके लिए क्रायोजेनिक टेम्परेचर की जरूरत है। तो नेक्स्ट चैलेंज क्या है, टू अचीव सुपर कंडक्टिविटी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए आगे, नेक्स्ट। सो ये आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, हमने क्रायोजेनिक्स भी बताया था मैंने। बताइए क्या है क्रायोजेनिक? इट इज द प्रोडक्शन, इट इज द प्रोडक्शन और बिहेवियर, it is the production or behavior of materials at very low temperature, प्रोडक्शन और बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स एट वेरी लो टेम्परेचर, इसे हम क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक्स कहते हैं। अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर्स चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, क्रायोजेनिक्स। क्लियर? चलिए आगे, अब हम आते हैं सुपर कंडक्टर पे। अच्छा, ये हमने ऑलरेडी बात की है, हमने डिस्कस किया हुआ था। यस यस, अन्वेषा शर्मा, वी यूज क्रायोजेनिक इंजिन्स इन मिसाइल, करेक्ट। उसमें हम लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन यूज करते हैं। हाइड्रोजन इज यूज्ड, ओके, hydrogen is used as a fuel and oxygen is used as an oxidizer in cryogenic engine. You are correct, Anvesha. That's great, man. That's a great news. ओके, तो ये हो गया आपका सुपर कंडक्टर का। हम आए थे अभी कहाँ पे, वी वेयर एट मिस्ट्री मटेरियल। तो देखिए मिस्ट्री मटेरियल, अब यहाँ पे देखिए आप, मिस्ट्री मटेरियल में अ मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर, ये तीनों का मिक्सचर उन साइंटिस्ट ने क्या किया, दे प्लेस्ड दिस इन अ माइक्रोस्कोपिक नीश। एकदम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लिए कार्बन के, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लिए हाइड्रोजन के और सल्फर के, इन तीनों के, और वो उन दोनों को रखा उन्होंने दो डायमंड के बीच में। अब ये एक्सपेरिमेंट है यहाँ, तो हमें इस एक्सपेरिमेंट के टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है। हमें ऑलरेडी पता है कि देयर इज अ मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर विच शोज सुपर कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर बट एट अ प्रेशर विच इज इक्वल टू द प्रेशर एट द सेंटर ऑफ अवर अर्थ। जिन स्टूडेंट ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, हमारा क्लास 11 AM को स्टार्ट होता है एवरीडे एट यूट्यूब, ऑन यूट्यूब। आज से हमारा क्लास 11 बजे स्टार्ट हो रहा है, नॉट एट 11:15, ओके। ये टाइम हमने चेंज कर दिया है, अब क्लास कितने बजे होगा, 11 AM को होगा। क्लियर? So then they triggered chemical reactions just with the help of laser light. So what they used? They used diamond, they used laser light, and they used material like carbon, hydrogen and sulfur, और उससे उन्होंने क्या अचीव की, they achieved super conductivity at room temperature that is of 15 degrees Celsius. Clear? डेली एट 11 AM, रमनदीप। आज से हमारा क्लास एवरीडे इट विल बी एट 11 AM, 11:15 नहीं रहेगा हमारा क्लास, 11 AM को ही होगा एवरीडे, ठीक है। नेक्स्ट, एज दे लोवर्ड द एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर, जैसे जैसे उन्होंने टेम्परेचर कम किया, रेजिस्टेंस टू अ करंट पास्ड थ्रू द मटेरियल ड्रॉप टू जीरो, इंडिकेटिंग दैट द सैंपल हैड बिकम सुपर कंडक्टिव। यस, ऑब्वियसली व्हेन यू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ एनी मटेरियल, when you reduce, यहाँ जितने हैं प्लीज लाइक दिस वीडियो, ओके। अन्वेषा इज सेइंग यहाँ पे जितने हैं प्लीज लाइक दिस वीडियो, डेली 11 AM, रमन, थैंक यू अन्वेषा, फाइन। सो जैसे जैसे आप टेम्परेचर लो करते जाओगे क्या होगा, देयर विल बी सुपर, दैट मटेरियल विल स्टार्ट शोइंग सुपर कंडक्टिविटी, यू नो दिस, ओके। then they increased the pressure and found that this transition occurred at higher and higher temperature। तो देखिए, when you keep pressure constant, when you keep pressure constant and reduce temperature, तो सुपर कंडक्टिविटी आएगी।
But when you keep temperature constant and increase pressure, तो भी क्या आएगा, सुपर कंडक्टिविटी शो की जाएगी. ठीक है. So the best result was a transition temperature of 287.7 Kelvin at 267 gigapascal, that is 2.6 million times atmospheric pressure. मतलब देखिए हमारा जो atmospheric pressure है उससे 2.6 million, 1 million is equal to 10 lakh, मतलब 26 lakh times more pressure जब आपने अप्लाई किया, तब जाकर तब जाकर तब जाकर क्या हुआ, आपके उस मटेरियल ने सुपर कंडक्टिविटी शो की. क्लियर. उस मटेरियल ने क्या की, सुपर कंडक्टिविटी शो की. वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो दिस इज ऑल अबाउट द सुपर कंडक्टर एंड द सुपर कंडक्टर. आप रीड कर लीजिएगा. तो एवरीबडी क्लियर अबाउट द सुपर कंडक्टिविटी, सभी को सुपर कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टिविटी ये कंसेप्ट क्लियर होगी. अब मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, देन आई विल गो अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक. उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं. अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं, दैट मींस यू आर गुड. नंबर 1, everybody understood what is superconductor? Everybody understood what is superconductor? Everybody understood what is superconductivity? Everybody understood what is resistance? Everybody understood when we can achieve superconductivity? And everybody understood what is the relation between temperature and pressure in achieving superconductivity. अगर आपको ये सब समझ में आ गया है तो गाइज यू आर गुड, यू आर लकी एंड यू आर ऑसम. आपका सुपर कंडक्टर और सुपर कंडक्टिविटी पे एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं जाएगा, नॉट इन प्रीलिम और नॉट इन मेन. सिर्फ आपको आज के बाद whenever you come across this word in current affair, जस्ट रीड दैट न्यूज. आपको एकदम परफेक्टली वो न्यूज समझ में आएगी, उस न्यूज का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा. और मेरा एम यही है, आपके एक एक कंसेप्ट जो है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, मैं कंप्लीट करा रहा हूँ. एंड रिमेंबर दिस सुपर कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टिविटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट for your prelims as well as mains examination. If you are making a list of important topics for prelim 2021 and mains 2020 or mains 2021, do include this superconductor topic. Very good morning Quasi Sahab, very good morning. हो गया clear? We are going ahead. So this is the timeline or milestones in superconductivity. Here you need to remember, सबसे पहले superconductivity हमने अचीव की थी 1911 में. That is more than 100 years ago. We achieved superconductivity in mercury. Where we use mercury in medical field? Mind, we are doing that only. There was one news in the Hindu newspaper that new superconductor material was found which showed superconductivity at room temperature. Yes, Kaji Saab, it is a regular class which takes place at 11 AM every day on YouTube. बताइए मर्क्यूरी कहाँ यूज होता है? वी यूज मर्क्यूरी इन थर्मामीटर, जो डॉक्टर टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज करते हैं. Then we use mercury in sphygmomanometer. We also use this in sphygmomanometer, which is used to measure the blood pressure. ठीक है. और इसी मर्क्यूरी की पॉइजनिंग की वजह से which part of India was in news? Which part of India was in news because of the mercury pollution, or which part of the world was in news because of the mercury pollution?
एंड विच डिसीज इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द मर्क्यूरी पोल्यूशन। चलिए बताइए, इसे कहते हैं लिंक करना टॉपिक्स को, कंसेप्ट्स को, ठीक है। सो पोल्यूशन की वजह से न्यूज में था कोडाई कनाल विच इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, इट इज अ हिल स्टेशन, कोडाई कनाल, और कंट्री है जापान, और डिसीज होता है मीना माता, मर्क्यूरी पोल्यूशन। वेरी गुड, वेरी गुड। ये मीना माता पे यूपीएससी ने पहले भी बहुत बार पूछा है, फ्यूचर में भी यूपीएससी पूछ सकती है। तो वी अचीव्ड सुपर कंडक्टिविटी इन 1911 इन मर्क्यूरी, ओके क्लियर। देन in 1930, that is after 19 years, we achieved superconductivity in nickel। यहाँ पे आप देखिए 4 केल्विन का मतलब होता है -269.15 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस में ही टेम्परेचर है। 10 केल्विन मतलब वही। देन इन 1941, दैट इज अगेन आफ्टर 11 years, we achieved superconductivity in niobium nitride 16 केल्विन पे, niobium nitride। देन इन 1953 वैनेडियम 3 एंड सिलिकॉन के एलॉय में we achieved superconductivity। इन 1971 न्यूबियम एंड जर्मेनियम में हमने वी अचीव सुपर कंडक्टिविटी। उसके बाद 1986 में हमने अचीव की, 1987 में अचीव की, 1998 में अचीव की, 1993 में, 1993 में, और हमने सुपर कंडक्टिविटी अचीव की इन 2011 इन ग्राफीन। We also achieved superconductivity in carbon quantum dots in 2018, and we also achieved superconductivity in hydrogen, carbon and sulfur alloy in 2020 at room temperature. This is the timeline or story of superconductivity. So this story starts from 1911 and we have updates up to 2020. Future में भी इसकी news आती रहेगी, you need to remember that. Okay, clear? So this is all about superconductivity। और यहाँ पे हमारे 18 अक्टूबर का जो साइंस का पेज था द हिंदू में वो कंप्लीट होता है। नाउ वी आर गोइंग टू द 19 अक्टूबर, और इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बड़ा मज़ा आने वाला है ये पढ़ाने में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कैसे देख लीजिए। सो न्यूज वाज सेलिब्रेटिंग स्किंक्स इन इंडिया। ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 62 स्पीसीज इन इंडिया फाइंड आउट की स्किंक की। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दिस एनिमल स्किंक? कितने लोगों को स्किंक के बारे में पता है, ये एनिमल कौन सा होता है? तो जिन्हें पता नहीं है उनको आज पता चलेगा। इस यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है, पहला ये जो हेडिंग है इससे कि इंडिया हैव 62 स्पीसीज ऑफ स्किंक। रिमेंबर दिस फॉर योर प्रीलिम 2021। नो इट्स नॉट अ बैड स्मेलिंग अप एनिमल कफील, इट इज, पहला पॉइंट तो इट इज हार्मलेस, सो नो नीड टू किल देम। सेकेंड पॉइंट दे आर इंसेक्टिवोरस। सेकेंड पॉइंट दे आर इंसेक्टिवोरस, मतलब वो इंसेक्ट को ईट करती है। एंड इंसेक्टिवोरस क्या है? लिजार्ड। एक्चुअली स्किंक इज अ टाइप ऑफ लिजार्ड। लिजार्ड का ब्रदर नहीं, लिजार्ड का ब्रदर एंड सिस्टर बोथ रुद्रानी, ठीक है। स्किंक इज हार्मलेस, इंसेक्टिवोरस एंड इट इज अ टाइप ऑफ लिजार्ड, clear, and it is found across the country in every biogeographic zone। so आपके लिए next question है, please tell me how many biogeographic zones are present in India? how many biogeographic zones are present in India? quickly बता दीजिए। साफ सुरड़ी, करेक्ट अनिकेत आहिरे, करेक्ट। इन महाराष्ट्र वी कॉल इट साफ सुरड़ी और साफ सुड़ी, लाइक दैट, मतलब इट लुक्स लाइक अ बिट लाइक अ स्नेक, लेकिन उसमें बहुत सारी स्पीसीज है। जैसे स्नेक को लेग्स नहीं है, स्किंक को लेग्स होते हैं। अनिकेत आहिरे इज सेइंग वी हैव 11 बायोजियोग्राफिक जोन्स। आई नीड टू नो द नेम्स ऑल्सो। आप लोग मुझे नाम भी बताओगे 11 बायोजियोग्राफिक जोन्स के, अगर आप 11 कह रहे हो तो। व्हाट अबाउट अदर्स गाइस? सो गए क्या? अरे भाई साहब मत सो, इतना मैं गला फाड़ रहा हूँ, इतनी मैं एनर्जी दे रहा हूँ, दिवाली के दिन आपको पढ़ा रहा हूँ और आप आराम से सो रहे हो क्या? उठ जाओ, उठ जाओ। यूपीएससी क्रैक करनी है, 2021 की प्रीलिम क्रैक करनी है भाई साहब, आपको सोना नहीं है। अगर आपको आईएएस बनना है तो जागते रहो, ठीक है। तो गाइस
देयर आर टोटल 10 बायोजोग्राफिक जोन। अगर 11 है तो आप लोग मुझे बताओगे, मैं 10 बायोजोग्राफिक जोन्स के आपको नाम बता दूंगा, आप 11th बायोजोग्राफिक जोन का नाम बता दीजिए। ओके, लोकनी, झारखंड एंड बिहार, रुद्रानी। ओके, चलिए आगे। ये देखिए, दिस इज स्किंग, this king species, this king species have legs, लेकिन there are some species of skink which do not have legs, which do not have legs। अब पता चल गया ना आपको, इसे skink कहते हैं। क्या है ये skink? It is harmless। दूसरा, skink is insectivorous, skink is harmless, skink is insectivorous। ठीक है, चलिए आगे। नाउ दीज आर द 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया। काजी साहब एक्टिव हो सर जी, दैट्स ग्रेट काजी साहब, इट इज वेरी ग्रेट कि आप एक्टिव हो। गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल बी बैक, जस्ट अ मिनट। Okay guys, sorry. So first we need to know the biogeographic zone। Okay, very good morning Jennifer। ये कितना बेकार दिखता है? अरे नहीं, बहुत अच्छा है वो। इज दिस शॉर्ट मेमोरी? व्हाट डू यू मीन शॉर्ट मेमोरी? अजय कृष्णा, ये तो इधर भी दिखता है, बिल्कुल दिखता है, बिल्कुल दिखता है सर। ये सभी टाइप का इंसेक्ट को ईट कर लेती है। हाँ पल्लवी शर्मा, बट सर लेग्स तो दिख रहे हैं। हाँ, कुछ स्पीसीज में लेग्स है, कुछ में नहीं है। देयर आर टोटल 62 स्पीसीज ऑफ स्किंक। ओके, ठीक है। इट्स वर्क ऑफ नेचर अन्वेषा, उनके लिए ह्यूमंस आर यू। यस दैट्स ट्रू। या है, इट्स सो ट्रू रुद्रानी। ओके फाइन, चलिए आगे। आप लोगों की चैट मैं अगर पढ़ते बैठा ना तो हमारा पूरा क्लास उसी में खत्म हो जाएगा। सो आई होप आपने ये 10 के 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स देखे होंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बाय वन हम जाते हैं। दिस इज ट्रांस हिमालय बायोजियोग्राफिक जोन, या फिर हम देखते हैं सबसे बड़ा बायोजियोग्राफिक जोन एरिया वाइज है 42% आपका डेक्कन पेनिनसुला और डेक्कन प्लेट्यू। ओके, डेक्कन पेनिनसुला और डेक्कन प्लेट्यू 42%, मतलब क्लोज टू 50% जो है आपका डेक्कन प्लेट्यू ही है। ठीक है, उसके बाद जो लीस्ट है, सबसे छोटा है, वो है 0.3% वाला आइसलैंड। आइसलैंड, अब इसमें एक हो सकता है, आप जो 11 बोल रहे हो ना, अंडमान के लिए अलग और लक्षद्वीप के लिए अलग, एक भी उनमें डिफरेंस आ सकता है, लेकिन ये आइसलैंड 10th बोला है उन्होंने। तो लार्जेस्ट डेक्कन प्लेट्यू बायोजियोग्राफिक जोन एंड स्मॉलेस्ट बायोजियोग्राफिक जोन इज आइसलैंड। क्लियर? उसके बाद अब हम वन बाय वन नॉर्थ से चलते हैं। चलिए नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, सभी को पता है कौन से माउंटेन रेंज मिल सकते हैं। कैन एनीबडी टेल मी which mountain ranges you can find in Trans Himalaya? Trans Himalaya, why would they have short memory? Arya TC, चलिए बताइए। So I will let you know। number one, Karakoram। Karakoram, this mountain range you will find in Trans Himalaya। There is also another mountain range, the name is Jaskar mountain range, you can find this again in the Trans Himalaya। Very good Aniketa and Rudrani, Aniketa and Rudrani। तो ये हो गया ट्रांस हिमालय। दूसरा जो है वो है आपका हिमालय। तो ये हिमालय देखिए, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड देन सिक्किम, पार्ट्स ऑफ द सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो स्टेट्स देखिए, सेकेंड बायोजियोग्राफिक जोन उसका नाम है हिमालय। और हिमालय ये जो बायोजियोग्राफिक जोन है, यू विल फाइंड दिस बायोजियोग्राफिक जोन इन जम्मू एंड कश्मीर, इन हिमाचल प्रदेश, इन यूके दैट इज उत्तराखंड, इन सिक्किम। ओके, it is in Sikkim as well as it is in Arunachal Pradesh। तो remember, हिमालयन माउंटेन रेंज कितनी स्टेट में से पास होती है? How many Indian states have Himalayan mountain range?
People compare those short-term memory people with these animal. Okay, Ajay Krishna, but that's not true. Himalaya passes through 12 Indian states. लेकिन when it comes to biogeographic zone, अगर यूपीएससी को ट्रिक करनी है, यूपीएससी आपको पूछेगी हिमालयन बायोजियोग्राफिक जोन इज प्रेजेंट इन हाउ मेनी स्टेट, तो उसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5 ओनली. Himalayan biogeographic zone is present in 5 states only. क्लियर? तो ये हो गया हिमालय. उसके बाद आता है सेमी एरिड बायोजियोग्राफिक जोन. दिस सेमी एरिड बायोजियोग्राफिक जोन यू कैन सी इट इज प्रेजेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, देन इट इज प्रेजेंट इन पंजाब, हरियाणा एंड गुजरात. So semi-arid biogeographic zone, you will find this semi-arid biogeographic zone in Punjab, in Haryana, in Gujarat and in parts of Madhya Pradesh also. ठीक है, ये 4 स्टेट. उसके बाद वाला है वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट तो सारी दुनिया को पता है. हाउ मेनी स्टेट्स? वेस्टर्न घाट्स पास थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स बताइए. वेस्टर्न घाट्स पास थ्रू 6 स्टेट्स और उनके नाम हैं. पहला है आपका गुजरात, देन महाराष्ट्र, देन गोवा. गोवा जाने का मन कितने लोगों का है? जरूर जाइएगा, लेकिन आईएएस बनने के बाद. देन केरला, सॉरी कर्नाटका पहले आएगा, देन केरला एंड तमिलनाडु. दीज आर द 6 स्टेट थ्रू विच द वेस्टर्न घाट्स पासेस. ठीक है. और वेस्टर्न घाट्स के बाद डेक्कन पेनिनसुला, यू कैन सी डेक्कन पेनिनसुला, वेरी इंपॉर्टेंट है. डेक्कन पेनिनसुला मध्य प्रदेश में है, डेक्कन पेनिनसुला महाराष्ट्र में है, डेक्कन पेनिनसुला कर्नाटका में है, डेक्कन पेनिनसुला तमिलनाडु में है, डेक्कन पेनिनसुला तेलंगाना में है, डेक्कन पेनिनसुला आंध्र प्रदेश में है, डेक्कन पेनिनसुला उड़ीसा में है, डेक्कन पेनिनसुला छत्तीसगढ़ में है, डेक्कन पेनिनसुला झारखंड में है एंड डेक्कन पेनिनसुला, यस दैट्स इट. तो सबसे ज्यादा स्टेट्स में आपका डेक्कन पेनिनसुला मिलेगा. ओके, क्लियर? क्लियर. सो डेक्कन पेनिनसुला सबसे ज्यादा स्प्रेड हुआ है. इट इज, वी आर टॉकिंग अबाउट बायोजियोग्राफिक जोन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट Deccan Peninsula as a part of geography. I am talking about a biogeographic zone जिसका नाम है Deccan Peninsula. So geography के according Deccan Peninsula is different and biogeography के according Deccan Peninsula is different. After that you will come across Gangetic Plain. This Gangetic Plain you will find in 3 states UP, Bihar and West Bengal. इन 3 स्टेट में आपको गंगा प्लेन्स मिलेंगे जो कि बायोजियोग्राफिक जोन है. कोस्ट आपको कहाँ पे मिलेगा? 2 जगह पे, वेस्टर्न कोस्ट एंड दी ईस्टर्न कोस्ट. क्लियर? वेस्टर्न कोस्ट एंड दी ईस्टर्न कोस्ट. विच कोस्ट लाइन इज ब्रॉडर? बताइए, वेस्टर्न कोस्ट लाइन इज ब्रॉडर और ईस्टर्न कोस्ट लाइन इज ब्रॉडर. दोनों में से कौन सी कोस्ट लाइन ब्रॉड है आप लोग बताओगे. और लास्ट में जो आता है, लास्ट बट वन इज वेरी गुड रुद्रानी, ईस्टर्न कोस्ट लाइन इज ब्रॉडर. लास्ट वन इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ ईस्ट एज अ बायोजियोग्राफिक जोन, नॉर्थ ईस्ट एज अ बायोजियोग्राफिक जोन, तो you do not count Arunachal Pradesh in this. Arunachal Pradesh is part of Himalaya Biogeographic Zone. It is not part of Northeast Biogeographic Zone. याद रहेगा. मैं आपको ज्योग्राफी और बायोजियोग्राफी में डिफरेंसेस जहां जहां यूपीएससी ट्रिक कर सकती है, जहां पे आपके आंसर गलत हो सकते हैं ना, वही बता रहा हूं. जैसे जैसे ही हिमालय की बात आती है, यू विल सी कि देयर आर 12 स्टेट्स, बट नो गाइस, देयर आर ओनली 5 स्टेट्स जहां पे हिमालयन बायोजियोग्राफिक जोन है. वी आर टॉकिंग अबाउट बायोजियोग्राफी जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ज्योग्राफी दोनों इंक्लूड है. समझ में आया? क्लियर? So Arunachal Pradesh is part of the Himalayan Biogeographic Zone and all other northeastern states except Sikkim, all other northeastern states except Sikkim, they are part of the Northeast Biogeographic Zone. You can see 9 and last one 10th is Andaman and Nicobar. और अगर आपको 11th इंक्लूड करना ही है तो लक्षद्वीप. चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, पर्पसफुली मैं एक क्वेश्चन बनाने वाला हूँ. अभी देखिए वेदर हाउ इज योर ऑब्जर्वेशन, आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है. ठीक है. द क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इन विच ऑफ द following state
you can find you can find Himalayan biogeographic zone as well as Trans-Himalayan biogeographic zone. Himalayan biogeographic zone as well as Trans-Himalayan biogeographic zone आपको कौन से स्टेट में मिलेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं। ए सिक्किम, बी मणिपुर, सी आसाम, डी पंजाब। बताइए आंसर क्या है इसका। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्विकली देखते हैं कितने लोगों को आता है इसका। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जो आंसर देना है ना वो ऑप्शन में दिया ही नहीं ना, आपको वो ऑप्शन में दिया ही नहीं। इट इज सिक्किम गाइस। तो अब यहाँ ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जम्मू एंड कश्मीर यू विल फाइंड ट्रांस हिमालयन प्लस हिमालयन, दो बायोजियोग्राफिक जोन्स मिलेंगे। देन आपको हिमाचल प्रदेश में भी दो जियोग्राफिक जोन्स मिलेंगे, ट्रांस हिमालयन एंड हिमालयन। एंड आपको सिक्किम में भी दो बायोजियोग्राफिक जोन मिलेंगे, ट्रांस हिमालयन एंड हिमालयन। So these are the three states in which you will find trans-Himalayan as well as Himalayan biogeographic zones. Okay, can anybody tell me in which of the following state you can find more than one biogeographic zone? More than one biogeographic zone कौन से स्टेट में मिलते हैं आप लोग बताओगे? ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन इज गुजरात, थर्ड ऑप्शन, ओके ये दो ही रखते हैं। ऑप्शन देता हूं मैं आपको ओनली वन, बी ऑप्शन है ओनली टू। ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए ऑन द स्पॉट, बोथ वन एंड टू। एंड डी आंसर है नाइदर वन नॉट टू। बताइए आंसर। तो इसका आंसर होगा बोथ वन एंड टू। अब हम लिस्ट ही बनाते हैं इन द स्टेट्स इन विच यू विल फाइंड मोर देन वन बायोजियोग्राफिक जोन। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर मोर देन वन बायोजियोग्राफिक जोन, हिमाचल प्रदेश मोर देन वन बायोजियोग्राफिक जोन, उसके बाद सिक्किम मोर देन वन बायोजियोग्राफिक जोन। आफ्टर दैट वेस्ट बंगाल मोर देन वन बायोजियोग्राफिक जोन। देखिए कोस्टल भी है और गंगा प्लेन्स भी है। आफ्टर दैट ओडिशा मोर देन वन बाय, जितने कोस्टल है ना उन सब में आपको एक से ज्यादा मिलेगा। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में एक ही मिलेगा। तमिलनाडु, देन केरला में आपको, यस केरला में भी दो मिलेंगे, कोस्टल एंड वेस्टर्न घाट। आफ्टर दैट कर्नाटका, देन महाराष्ट्र, इनमें वेस्टर्न घाट एंड यहाँ पे तो तीन मिलते हैं। देखिए कर्नाटका महाराष्ट्र में तीन मिलते हैं, कोस्टल बायोजियोग्राफिक जोन, वेस्टर्न घाट और डेक्कन पेनिनसुला, तीनों मिलते हैं आपको। ठीक है, देन गुजरात में मोर देन वन है, आपके राजस्थान में मोर देन वन बायोजियोग्राफिक जोन्स है, मध्य प्रदेश में मोर देन वन बायोजियोग्राफिक जोन है। ठीक है, तो दीज आर द सम स्टेट्स विच आर मोर देन वन बायोजियोग्राफिक जोन। गोवा में एक, हाँ गोवा भी आएगा, गोवा में दो है, एक वेस्टर्न घाट एंड सेकेंड वन इज दी कोस्टल बायोजियोग्राफिक जोन। सो दैट्स इट। आई होप आपको जहां बायोजियोग्राफिक जोन भी पता चल गए, हाउ मेनी बायोजियोग्राफिक जोन्स वी हैव, और ट्रिक्स भी बता दी मैंने। वेयर एवर यूपीएससी प्लेस ट्रिक्स, वो भी मैंने ट्रिक्स बता दी। अब आपका कभी भी इस पे गलत नहीं होगा। सो यू विल फाइंड दिस स्किंक which is insectivorous and harmless and a type of lizard in all or every biogeographic zone। आपको ये ट्रांस हिमालय में भी मिलेगी और कोस्टल बायोजियोग्राफिक जोन में भी मिल जाएगी स्किंक। तो ये स्किंक है। चलिए आगे, व्हाट इज स्किंक? इट इज रिलेटिवली स्मॉल और नो लेग्स। उसकी जो बॉडी है ना वो बॉडी लॉन्ग है, लेकिन एक तो उसके लेग्स एब्सेंट हो गई है, इट हैज वेरी स्मॉल लेग्स। ठीक है, देन वेयर यू कैन फाइंड दिस, यू कैन फाइंड इट अराउंड योर होम्स, यू कैन फाइंड इट इन गैरेजेस, यू कैन फाइंड इट इन ओपन स्पेसेस सच एज पार्क, स्कूल, पार्क्स में मिल सकती है, स्कूल प्लेग्राउंड में या अराउंड लेक्स। सो बेसिकली आपको स्किंक कहाँ मिलती है? नियर बाय ह्यूमन, you will find this skink near by human settlement, नियर बाय ह्यूमन सेटलमेंट ही आपको ये स्किंक मिलती है गाइस। दैट इज कूल।
मतलब इट लिव्स नियर बाय ह्यूमंस। चलिए आगे, दिस स्किंक एज ओके दे आर कॉमन रेप्टाइल। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, स्किंक इज हार्मलेस, स्किंक इज इंसेक्यूरस एंड स्किंक इज एन एग्जांपल ऑफ रेप्टाइल। स्किंक क्या है? ये रेप्टाइल है, मेरे विंडो के पास भी मिलता है। ओके अन्वेषा, ग्रेट। हमारे महाराष्ट्र में ना ऐसा समझा जाता है कि इस स्किंक के टेल को अगर टच कर ले ना, हम ये लिटिल फिंगर से उसे अगर टच कर ले तो इट इज वेरी लकी। हम एग्जाम जाने से पहले, व्हेन आई वाज चाइल्ड ना, एग्जाम जाने से पहले वी यूज टू फाइंड आउट दिस थिंग और फिर हम उसके पीछे भागते थे उसको टच करने के लिए टेल को, ताकि हमारी एग्जाम अच्छी जाए। ओके सर, आर दे सॉलिटरी? मोस्ट ऑफ द केस दे आर सॉलिटरी। अनिकेत आहिरे, सर इसमें स्पेशल क्या है? आई मीन न्यूज में क्यों आया है? बिकॉज अरहान, वी अकेले एक कंट्री दैट इज इंडिया में आपको इस स्कीम की 62 स्पीसीज मिल रही है। इतनी ज्यादा स्पीसीज इंडिया में मिलना, इट इज अ वेरी बिग थिंग फ्रॉम एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स व्हाई। तो याद रखिए ये जो स्किंक है ना, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ प्रोमिनेंट रोल इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम। तो ये इट हैज अ प्रोमिनेंट रोल इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम। ओके, अब तो मैं उससे पैड बना लूंगी, लकी ही लकी है। यस अन्वेषा, ट्रू। चलिए वी आर गोइंग अहेड। सो अब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, हाउ मेनी स्पीसीज वी फाइंड, हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ स्किंक आर प्रेजेंट इन इंडिया? बताइए, हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ स्किंक आर प्रेजेंट इन इंडिया? 62। आउट ऑफ these 62 species, 33 species of skink are endemic to India. This is very very unique, this is very very unique and it is very very important। यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट। कितनी? 33 स्पीसीज ऑफ दिस स्किंक आर एंडेमिक टू इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कि 33 स्पीसीज ऑफ स्किंक आर एंडेमिक टू इंडिया? इट मीन्स that 33 these 33 species of skink can be found only in India, nowhere else। सर इसकी भी वेनम होता है? नो काजी साहब, वी आर कॉलिंग दिस skink हार्मलेस, इट मींस इसमें वेनम नहीं होता। यस, सो 33 स्पीसीज क्या है? एंडेमिक है, ये आप याद रखिए। वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज एंडेमिज्म? व्हाट इज एंडेमिज्म? इट इज द इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ स्पीसीज। वन बाय वन कीवर्ड याद रखिए। व्हाट इज एंडेमिज्म? इट इज इकोलॉजिकल स्टेट। व्हाट इज एंडेमिज्म? इट इज इकोलॉजिकल स्टेट। ओके, क्या है इकोलॉजिकल स्टेट? नेटिव टू अ सिंगल डिफाइंड ज्योग्राफिक जोन। What is ecological state? Native to a single geographic zone, sorry, single geographic location, single geographic location, native to single geographic location। Okay, Aniket Ahire, in Maharashtra there is misconception regarding its kings। People say that if we touch their tail we found money। ओके, यस यस, देयर आर मेनी मिसकंसेप्शन, जैसे अभी मैंने लक वाला बताया। ये सेकंड कीवर्ड याद रखना है। थर्ड कीवर्ड यू नीड टू रिमेंबर दैट दिस skink can be fine, that's it। So you, this is the ecological state of an organism being native to a single geographic location, being native to a single geographic location, that is known as endemism or that is known as endemic। क्लियर? क्लियर? अगर यही टर्म अगर ह्यूमंस के लिए, हम इसी के लिए टर्म यूज करते हैं इंडिजिनस, मतलब दीज आर द ट्राइब्स विच आर फाउंड ओनली इन इंडिया एंड नोवेयर एल्स, उसे हम कहते हैं इंडिजिनस ट्राइब। व्हेन इट कम्स टू एनिमल्स, so we use the term endemic। when it comes to plants we use the term endemic। okay, we are going ahead। good morning हेलेनोवा, आपने बहुत लेट ज्वाइन किया हेलेनोवा। आवर क्लास स्टार्टेड एट 11 AM शार्प। आगे चलिए। So there are, see, an alternative term for a species that is endemic is presumptive। Please remember this term। Instead of using the term endemic, जैसे मैं आपको यहाँ क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ ना, मजा आएगा। देखिए, which of the following animal, question is which of the following animal is
प्रीसिंक्टिव टू इंडिया, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ए लॉयन, सॉरी, ए एशियाटिक लॉयन, बी टाइगर, सी only A and D only B। आंसर क्या आएगा? एशियाटिक लॉयन, बिकॉज द मीनिंग ऑफ प्रीसिंक्टिव इज एंडेमिक। तो आपको मैं एंडेमिक के बारे में याद रहेगा सभी को, प्लीज रिमेंबर दिस टर्म, बिकॉज यूपीएससी सिर्फ टर्म बदल कर आपको क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना देगी जस्ट बाय चेंजिंग द टर्म। तो क्या है? प्रीसिंक्टिव, ए एंड सी करेक्ट रुद्रानी, ए एंड सी आंसर है। चलिए आगे। So now I am going to enlist the important endemic species of India. Please listen to me very carefully. Asiatic lion, which is found in Gir forest, is endemic or pre-cinctive. Endemic or pre-cinctive to India, or you can say it is endemic or pre-cinctive to Gir forest, which is located in the state of Gujarat. And this Asiatic lion is one of the 5 big cats found in India. Can anybody enlist the? Can anybody tell me the names of 5 big cats that can be found in India? 5 बिग कैट के नाम बताइए। एक का नाम है एशियाटिक लॉयन, वन इज एशियाटिक लॉयन। व्हाट अबाउट दी अदर 4? बाकी 4 के नाम बताइए। दूसरे का नाम भी मैं बता देता हूँ आपको, या आप वेट करो आपके आंसर का। शुड आई वेट फॉर योर आंसर? यस, बंगाल टाइगर, दिस इज द बिग कैट दैट इज फाउंड इन इंडिया। वेरी गुड, 2 हो गए, अब 3 रह गए। बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ थर्ड? स्नो लियोपार्ड, लियोपार्ड। ब्लैक पैंथर इंडिया में नहीं मिलता रुद्रानी, स्नो लियोपार्ड लेपर्ड, this is third big cat in India. What about the fourth big cat? Fourth big cat, fourth is clouded leopard, and fifth is Indian leopard. So these are the 5 big cats that can be found in India: Asiatic lion, Bengal tiger और बाकी 3 leopard है, snow, clouded and the Indian। Okay, आगे देख लीजिए। So the big cats of India: Asiatic lion, Bengal tiger, snow leopard you will find in Himalayas, clouded leopard you will find in the Himalayan foothills and China, and Indian leopard you can find this in the deciduous forests of India। ओके, डेसिडियस फॉरेस्ट, इसी को हम महाराष्ट्र में हम कहते हैं बिबट्या। आप लोग क्या कहते हैं उसे? अपना लोकल नाम बताइए। कर्नाटका हैज ब्लैक पैंथर, नो दैट माइट बी अल्बिनो रुद्रानी, दैट माइट बी अल्बिनो। इंडिया में ब्लैक पैंथर नहीं मिलते, ब्लैक पैंथर आर नेटिव और एंडेमिक टू साउथ अमेरिका। ओके रुद्रानी, चलिए आगे देखिए। दिस इज द ब्यूटीफुल क्रिएचर, दिस इज नोन एज क्लाउडेड लेपर्ड। Yes, Black Panther is in Jungle Book but not in India. Yes, Kapil, very good. Leopard को हम तेंदुआ कहते हैं ना, तो this is clouded leopard, beautiful creature of the nature. This is snow leopard. देखिए जब आप IAS बनते हो ना तो आपका एटीट्यूड ऐसा होता है। When you become an IAS officer और IPS officer ना, this is your attitude, और बिल्कुल ऐसा ही एटीट्यूड होना चाहिए कभी भी, not after achieving something. Every time you should be like this. Look at the intensity of the eyes, look at the way that leopard is standing, confident, ready to lead, dream with ambition, dream with ambition, lead with conviction। कमला हैरिस। आगे चलिए। दिस इज इंडियन लेपर्ड, तेंदुआ, हम महाराष्ट्र में इसे बिबट्या कहते हैं। Again you can see the pose and all, what a beautiful creature of the nature. So these are the 3 leopards, then Asiatic lion and Royal Bengal tiger. These are the 5 big cats that can be found in India. We are going ahead. So first endemic species that we discussed was Asiatic lion. Second endemic species that is Kashmiri stag. It is also known as hangul. इस पे हमने टेस्ट में क्वेश्चन भी पूछा था। You will find this in Kashmir Valley, also known as hangul or also known as Kashmiri stag.
जो आपको दाचीगम नेशनल पार्क में मिलेगा, कश्मीर वैली में मिलेगा, चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में भी मिलेगा। You will find this in Chamba district of Himachal Pradesh and Dachigam National Park and Kashmir Valley in Jammu and Kashmir. Then third endemic species of India is lion-tailed macaw, which you will find in Western Ghat. These lion-tailed macaws are present in Western Ghat. ये देख लीजिए, अब इसे बहुत केयरफुली सुनिए, बहुत केयरफुली सुनिए। See yourself in a way that, okay, dream with ambition, lead with conviction, and see yourself in a way that other may not because they never thought in that way. ऐसा कुछ है, आपको मैंने लिखने के लिए कहा था, है ना? So lion-tailed macaw is the rarest and most threatened. Lion-tailed macaw is the rarest and most threatened endangered primate. Lion-tailed macaw is a primate. It is rarest, it is most threatened, it is endangered, found only in the western Ghats of southern India, that is Kerala and Karnataka and Tamil Nadu. But mainly you will find this lion-tailed macaw in the state of Kerala. चलिए आगे देखिए, this is Kashmiri stag or hangul. Beautiful. इसे कहते हैं beauty. Okay, and this is the lion-tailed macaw. देखिए इसकी tail like lion, then it also have mane like lion. सिर्फ सिर्फ face क्या है, बंदर जैसा है, बाकी सब lion जैसा है, ठीक है, not exactly everything like lion, but this one and this one is like lion. That's why we call this lion-tailed macaw. And remember, it is a primate. Lion-tailed macaw is a primate endemic to southern Indian. What you can see? No, Barasingha is completely different. Anvesha Sharma. Okay, sir, हंगुल कैसे होता है? अब कभी देखा नहीं है. As I am belong to JNK. आप JNK से हो, ये रहा हंगुल. आपने देखा नहीं, अभी मैंने पिक्चर तो शो किया. सारे बंदर बदमाशी होते हैं ना, ठीक है. दिस इज lion-tailed macaw. रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो. बाकी का जो है हम कल डिस्कस करेंगे. आज के लिए बस इतना ही काफी. सो गाइस, जितने भी न्यू स्टूडेंट है, वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर वेरी केयरफुली, दैट इज you need to subscribe to this telegram channel because I upload notes on this telegram channel in PDF format, ताकि आप 2021 की एग्जाम के लिए प्रॉपर वे से प्रिपरेशन कर सको. This is my Unacademy channel. Okay, sorry, this is my Unacademy profile. What you need to do, you need to follow me on Unacademy. You need to dedicate your hats to me on Unacademy, and don't forget this. ये बहुत ही important और crucial है. Please use ESK US code for 10% discount on Unacademy subscription. Whether you are taking a plus subscription or you are taking a iconic subscription, आपको यूज क्या करना है कोड? आपको SK US कोड ही यूज करना है. काजी साहब कह रहे हैं बहुत अच्छा सेशन सर जी, मजा आ गया आज. थैंक यू वेरी मच काजी साहब. Do continue watching me every day at 8 a.m. on Unacademy Learning app. This is for you, Kazi. Every day at 8 a.m. on Unacademy Learning app and every day at 11 a.m. on YouTube. तो आपको और मजा आएगा, ठीक है. ये दोनों सेशन आपको मेरे अटेंड करने हैं. क्लियर? So this is about Kazi साहब. Yes, see you tomorrow, everybody at 8 a.m. tomorrow. Okay. शक्ल पर मत जाए सर प्लीज, शक्ल से हम भी बदमाश लगते. अच्छा, बिल्कुल शक्ल से बदमाशी लगना चाहिए, लेकिन अकल से होशियार होना चाहिए. ओके. अगेन हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी. तुमके सेशन अटेंड के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ दो सर. थैंक यू सर. रूपाली, इट इज यस, इट इज द प्ले ऑफ योर माइंड. आप अगर खुद को हमेशा ऐसा सोचोगे कि यस आई विल बी एन IAS ऑफिसर, आई विल डेफिनेटली बिकम एन IAS ऑफिसर, तो आप पक्का बनोगे. लेकिन अगर आप खुद पे डाउट करोगे ना, तो दैट इज अ प्रॉब्लम, because doubt kills more dreams than actual reality. Okay, thank you वैदेही साळवे. दिवाळीच्या तुला पण खूप खूप शुभेच्छा. थैंक यू वेरी मच. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस. अगेन जाते जाते मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बोल दूं. This code is very important. Don't forget to use this code SKUS for 10% discount, and do join me at 8 a.m. on Unacademy Learning app and also join me at 11 a.m. on YouTube. मैं इन दोनों सेशन में आपके कौन कौन से टॉपिक कवर करता हूँ, कौन कौन से टाइप टॉपिक कवर करता हूँ. आई कवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
आई कवर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड आई कवर ज्योग्राफी मैपिंग। अगर आप मेरे ये 2 सेशन रेगुलरली करते रहोगे तो यू विल डेफिनेटली आंसर एटलीस्ट, मैं एटलीस्ट कह रहा हूँ, मिनिमम बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस इन 2021 prelims. So just attend sessions, attend these classes and relax. You will definitely crack UPSC CSE 2021 prelims और मेंस के लिए भी मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट आल्सो। ओके, सो दैट्स इट, आई गेस देयर इज नो डाउट, किसी की कोई डाउट नहीं है। अगेन जाते जाते बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। टिल दैट टाइम बोल टू बाय, बोल टू बाय गाइस, पक्का, श्योर, okay fine, bye bye, take care and see you tomorrow at 11 sorry 8 a.m on Unacademy learning app। और कल सब शार्प 8 बजे ज्वाइन करोगे। टेस्ट मिस मत किया करो गाइस, क्योंकि टेस्ट बहुत क्रूशियल है। ये नॉलेज जो आपने पढ़ा है या जो आपने गेन किया है ना, इस नॉलेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टेस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच काजी साहब, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड यू टू एंजॉय योर लाइफ। ओके, बाय बाय गाइस।